Hello and welcome back to another video. Your Phones on Judge with me Kashman. Today we are going to talk about our favorite variant, that is LG V20. Yes, we are going to talk about LG's V20 today out here. It was a 2016 model but was a great variant than V10. Yes, V10 से अगर इसे कंपेयर करें या बात करें V10 के और V20 के बारे में, तो we can say V20 was a good variant out है, because V10 का जो look था भले ही बहुत ज़्यादा different था, but it did go well with the audience out there because the look of LG series has been one of the most key featured out there, which users have always liked. And that was one of the reasons why V10 was not much popular as compared to VCD. वी सीरीज के V20 की बात करें तो कह सकते हैं कि इसका लुक जो है बहुत कॉमन है, बहुत अच्छा लुक है. द लुक आउट देयर इज रियली अमेजिंग वन आउट है. द लुक इज रियली गुड एंड कैन बी सेड वन ऑफ द बेस्ट इन द एलजी सीरीज आउट देयर. एलजी सीरीज में काफी ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है. We can also say that this is a light-weighted phone because not only just light-weighted but a great variant out here with weightage of around less than 180 grams, so it's definitely great weight out here. Whereas you get to see Gorilla Glass protection also. Gorilla Glass की protection इसमें भी है. Gorilla Glass की protection is a must thing out there right now. So we can say it's a good variant out here. But as well as you will not see the plastic bag and the stainless steel work out there. मतलब V10 we have seen that it was a plastic framework and had a plastic bag or aluminium or we can say stainless steel bag in some parts, but in this variant you will always find aluminium work, aluminium framework, aluminium bag. So that is one of the reason why that variant was not much popular, because plastic cover या plastic body होने के बाद भी बहुत heavy था. So that was one of the reason. सिंगल सिम फोन है, डुअल सिम फोन है, मतलब टू वेरिएंट्स आर अवेलेबल, सिंगल सिम एंड डुअल सिम आउट देयर with amazing capturing capacity and amazing storage capacity as well as resistance capacity to dust and water. Talking about this variant, we can say that the screen size remain the same and IPS capital screening remain the same. Resolution has decreased slightly, 513 हो गया, 515 से we can say slightly it has reduced. Talking about this variant, Gorilla Glass की protection, which we have already told, Gorilla Glass 4 है. But talking about this variant, it has a dual rear camera. Yes, पहले हमने already आपको बता रखा है कि V10 में जो अच्छा point था, best point था, वो था उसका dual selfie camera. But this phone has a dual rear camera. One is of 16 megapixel and another one is of 8 megapixel. मतलब 16 और 8 megapixel के दो rear camera यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं with dual LED flashlight. So that can be said at a very good version out here, very good variant out here. But you will only get to see a single selfie camera out there. मतलब single selfie camera देखने को मिलेगा, dual selfie camera नहीं है, single है. You will also get to see that the memory card remain the same, 32 GB and 64 GB along with 4 GB RAM. The operating system has definitely upgraded and that's one of the key feature and another important point why this phone is much popular. Operating system की बात करें तो Android 7 is there in V20, which is upgradable up to Android 9. So that's a wonderful feature and a very good point to remember out there. Along with it, Snapdragon 820 works well with octa-core processing system. Yes, these two work hand in hand and goes very well. Apart from this, everything remain the same. चाहे हम बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसेशंस की या बात करें इसके USB टाइप चार्जिंग की या बात करें, टाइप चार्जिंग थोड़ा सा डिफर हुआ है, इसमें C टाइप का चार्जर आ गया है, बट चार्जिंग कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट द सेम. We can say that it is still a quick fast charging about there, and you get to see that 3200 mAh battery has changed out there. Initially it was 3000 mAh battery, मतलब पहले सिर्फ 3000 mAh की बैटरी थी, अब 3200 mAh की बैटरी, so that's also a change out there. You get to see the connectivities remain the same, everything remain the same, there does not change out, they did not upgrade or did not change out here, but still remain the same. So it can be said as a good variant out here. And talking about this good variant, good out there, we have got a good pricing, मतलब एक अच्छी pricing भी जरूरी है अच्छे variant के लिए. So talking about the good pricing, everything, we have got a site for you, and for that all you have to do is go on Google and type phoneson.ae, या तो आप description में जाकर link पर भी click कर सकते हैं. In both the options you get to see this kind of a website, ऐसी website आएगी, and
This website offers you a great pricing and 6 months warranty, 7 exchange policy, COD, free shipping, as well as n number of brands out in the category of all mobile phones. इस category में आपको इतने सारे brands देखने को मिलते हैं. So let me remind you the site name. This is the site name out here. The site name is phoneZone.ae. The highlighted one is the site name. आप इस सर्च बार पे जाके अपना फेवरेट मॉडल सर्च कर सकते हैं. Yes, you can search out your favorite model also. Like I am typing V20 variant out here. So V20 के मेरे पास दो variants हैं. Let us search both the variants simultaneously. Result for both the variants is out. मतलब दोनों variants के result आ चुके हैं and we get to see that the result says both have a same condition which is refurbished condition. दोनों में refurbished लिखा है तो हम पहले बात कर लेते हैं refurbished word की, refurbished condition की, उसके बाद pricing और site के बारे में डिस्कस करते हैं. पहले बात refurbished. Refurbished की बात करें या बात करें refurbished word and brand new products की, they both are quite similar products. We can say that refurbished products and the brand new products, they are actually very same in the functionality, structurality and the integrity of these phones. We can also say that these phones might only differ in the usage capacity or the pricing range. Why we say so? Because the word itself, refurbished itself means creating, new, again. Re means this, again, something new, like पहले जैसा बनाना. Furbished means from the older parts. Yes, furbished means from the old part or something like that. When we combine these two different words out there, then it becomes like creating something newly like from the old one or creating new like product again. So we can say that refurbished is new like, or we can say like brand new something. मतलब एकदम पहले जैसे, एकदम brand new जैसा, एकदम ऐसे कह सकते हैं. Is something creating newly like again. So we can consider in that way. Talking about the refurbished product and brand new product, both of these products are quite same in the structurality, as I already told you. Structurality in the sense like the model which we use, which are classified as brand new, and if the same product is classified in the refurbished category, then they are absolutely same because the display remains the same, the screen size remains the same, the outer structure remains the same. मतलब सब कुछ same ही रहता है, कुछ बदलता नहीं है. फंक्शनैलिटी में सेम क्यों बोल रहे हैं हम? फंक्शनैलिटी में सेम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज द प्रोसेसिंग सिस्टम यूज्ड इन इट और एनीथिंग यूज्ड इन इट इज एब्सोल्युटली द सेम. मतलब इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए जाते, बस इसमें ये होता है कि these are again tested once they have been used by the user. They are again tested and made something new, like made brand new, like so that this can be used again by another user. Yes, this clearly means that मतलब एक बार यूज हो चुका है यूजर से, अब हम दूसरे यूजर को अगर ये यूज करना है who are not able to have that in the profitable rates, for whom this might be a brand new product, might be of a little bit expensive. So for them we do this refurbished products. मतलब उनके लिए refurbished product किए जाते हैं so that उनके लिए profitable rates में आए. This is what refurbished products happens to be. Talking about this product, talking about refurbished, or talking about the classifications or testimoniality, verifications, everything out there. Let me tell you the requirement or the parameters which are involved in brand new as well as in refurbished. ब्रांड न्यू की बात करें तो ब्रांड न्यू में भी आपके लिए डिस्प्ले होता है, आपके लिए टच स्क्रीन होती है, आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सीपीयू होता है, उसका कनेक्टिविटीज होती हैं, उसकी कैमरा, ऑडियो, वीडियो क्वालिटी, द कनेक्ट हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज आउट देयर, द सेंसर मीटर्स आउट देयर, इवन द डाटा वाइपिंग एंड इन द इंटीग्रल पार्ट्स जो इसके अंदर के प्रोसेसिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे आ गए, इसकी वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी, एवरीथिंग आउट देयर इज चेक. Whereas if we talk about refurbished product, तो उसमें भी सेम चीजें ही देखी जाती है. मतलब उसमें देखा जाता है आपका डिस्प्ले कैसे, स्क्रैचेस है नहीं है, अगर नहीं है तो ओके, अगर है तो उसको फिर रिपेयर किया जाता है. बटन्स वगैरह कैसे हैं डिस्प्ले पे, द टच स्क्रीन वर्किंग ऑन डिस्प्ले और ऑन द बैक साइड इज वर्किंग और नॉट, द कनेक्टिविटीज आर हाउ, whether they are working or not, बैटरी लाइफ कैसी है, योर डाटा वाइपिंग आउट देयर, कलराइजेशन, इंटीग्रल पार्ट, ओएस सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है,
और प्रोसेसर कैसा है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी है, सिम रिकग्नाइजेशन है या नहीं है, बटन इंटैक्ट है या नहीं है. With all the specifications, all the features which we check in brand new are checked out here itself. Once they are checked, once they are classified, once they are verified, then this is given as a certificate that yes, they have been refurbished, they have been certified as refurbished. Now you can use them. When we use them, we can say that these products definitely owe a very good quality because ये एक बार यूज होने के बाद उनको दोबारा से चेक किया जाता है, तो वी कैन से कि उन्हें और भी अच्छे से चेक किया जाता है, बारीकियों से चेक किया जाता है, so that you don't get any complaint regarding the product out there. So this is what refurbished products are all about. उनके टेस्ट्स कैसे होते हैं. Now let us move ahead and see कि benefits क्या है refurbished products के over the brand new products. अगर ब्रांड न्यू की बात करें और बात करें रिफर्बिश की, तो इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट बहुत माइनर है. जस्ट लाइक दैट यू कैन सेव अप टू 15%. ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर स्लाइटली एक्सपेंसिव आउट है. सो यू कैन सेव अप टू 15% बाय हैविंग अ रिफर्बिश प्रोडक्ट, बिकॉज रिफर्बिश प्रोडक्ट्स कॉस्ट यू स्लाइटली लेस एज कम्पेयर टू ब्रांड न्यू. मतलब ब्रांड न्यू से थोड़ा सा कम वो आपको कॉस्ट करते हैं. You definitely can have this point with you कि आपको savings मिल जाती है up to 15%. Whereas you also get a pocketable rates for your products. मतलब आपके desirable products जो है, whichever product you want to buy, whichever product is your desirable one, favorite one out here, they are in your pocketable rates. Whereas when we talk about the brand new, they are slightly expensive out here, so you don't get every time your favorite models. But yes, refurbished में अगर एक बार हम refurbished category में आते हैं, तो we find our favorite models also in a very reasonable rates. Apart from that, usually we don't get warranty period when a product has been once used out, तो उसकी warranty period जो है usually खत्म हो जाती है. But here you get to see 6 months warranty. मतलब यहाँ पर आपको 6 months की warranty period भी देखी जा रही है. As well as you get a 7-day exchange and return policy. A 7-day exchange policy is also there. You can definitely check this out कि ये major points जो है refurbish में यहाँ cover up किए जा रहे हैं. These are wonderful products out there. You can definitely check out the website जहाँ की अभी हम बात कर रहे थे. पूरा आपको वहाँ पर website पे देखने को मिल जाएगा. Talking about the website, let me take you back to the website so that you don't miss out anything. And अगर आप वेबसाइट को सर्च करना चाहते हैं, गूगल में भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर भी जा सकते हैं. This is the site I was talking about. Yes, this is the site I was talking about. Site name is phones.ae, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फेवरेट गैजेट बहुत ही अच्छे रेट पर, जहाँ आपको देखने को मिलते हैं 6 months वारंटी, 7-day एक्सचेंज पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी आउट है, एवरीथिंग इज देयर. मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाता है. Apart from that, you get to see a category of all mobile phones. यहाँ पे एक सर्च आइकन है, एवरीथिंग इज आउट है. सर्च आइकन में आप स्पेसिफाइड वे में अपना मॉडल सर्च कर सकते हैं. और मोबाइल फोन्स में आपको n नंबर ऑफ ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, where you get to see your favorite brands out there, so you can definitely check out this. This is all about today. आप यहाँ पर आके अपने फेवरेट ब्रांड चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी बेस्ट प्राइसिंग के लिए आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं कि आपको कौन से मॉडल के बारे में क्या जानना है, बिकॉज our executive helpline is available for you all 24/7. Till then, take care. I'll see you in the next video.